प्रियंका चोपड़ा हुई मल्लिका शेरावत के कमेंट से ऑफेंड। It was something that I felt extremely offended by. प्रियंका को आया मल्लिका शेरावत पर गुस्सा। I think Mallika's statements, what I think is very callous, and I don't agree with her, and I think it was upsetting for me as a woman. और इसीलिए प्रियंका ने खोला मल्लिका के खिलाफ मोर्चा। We are a progressive nation. I disagree with the fact that we are a regressive nation. We are all sitting here talking about educating the girl child. We are all sitting here talking about taking our country forward. And I think it's a misrepresentation of what our great nation is in a world platform. मिस वर्ल्ड रह चुकी प्रियंका का ये रिएक्शन आया जब वो आई थी एक सोशल इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पीसी से जब पूछा गया उनका रिएक्शन अबाउट मल्लिका शेरावत्स कमेंट ऑन इंडिया बीइंग रिग्रेसिव एंड डिप्रेसिंग कंट्री, प्रियंका अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और उन्होंने मल्लिका के कमेंट्स पर दिया ये करारा जवाब। Mallika Sherawat recently made a statement at the Cannes. Very interesting. Yeah, right. That India is a regressive and depressive place for a woman to be in. You know, it's a very bold and a very extreme point of view. So being a Bollywood celebrity, how do you react to the statement? They were very callous, and I don't agree with her. And I think it was upsetting for me as a woman. I think Mallika's statements, what I think is, we are a progressive nation. I disagree with the fact that we are a regressive nation. It's a misrepresentation of what our great nation is in a world platform. So I think it was something that I felt extremely offended by. वैसे आपको बता दें कि कांस जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गई मल्लिका शेरावत ने वहां न सिर्फ इंडिया को रिग्रेसिव फॉर वुमेन एंड अ डिप्रेसिंग प्लेस टू बी इन बताया, बल्कि शी ऑल्सो एडेड दैट इंडिया इज अ हिपोक्रिटिकल सोसाइटी। और मल्लिका के इन स्टेटमेंट्स पर न सिर्फ प्रियंका चोपड़ा बल्कि माधुरी दीक्षित ने भी अपने डिफरिंग व्यूज कुछ इस तरह जाहिर किए। Madhuri, today Mallika Sherawat was in the news for a comment that she made referring to India as regressive and depressive. As someone who's lived abroad, I would like your reaction on the statement. I haven't read the statement, but I don't think so. I think India is moving forward, and we see a lot of changes here for the better, and I see a golden future for India. That's what I see. कमिंग बैक टू प्रियंका, वो यहाँ वाकई अपनी कंट्री के पूरे सपोर्ट में थी, एंड शी हैड अ लॉट मोर टू से अबाउट हाउ बॉलीवुड इज एक्सटेंडिंग देयर हैंड टू टेक इंडिया फॉरवर्ड एज अ नेशन। As public people, I feel, and I can't speak for the film fraternity, but I feel that I have a social responsibility. We can stand up and say, this is our opinion and this is what we want to do. For example, Farhan starting Mard, or for example, so many initiatives that have been taken up by the film fraternity to make their voice heard. लेकिन सबसे ज्यादा अग्रेसिव कमेंट तो प्रियंका ने मल्लिका को दे दिया। It was something that I felt extremely offended by. तो अब देखना ये है कि मल्लिका अपने इस कंट्रोवर्शियल कमेंट को मिल रहे रिएक्शंस पर किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगी।